क्या नाम है आपका? सर निहारिका यादव। निहारिका, कुछ अपने बारे में बताइए निहारिका। So I've been born and brought up in Markapur, Boda, and I did my schooling from there, and then I went to Lucknow, and then I did my college from here, from National University Lucknow, and then I pursued my master's from Hamilton University. My father is a civil engineer, and my mother is a chemical. मनिकापुर गोंडा, Yes. अच्छा, तो बड़ा फेमस जगह है किसी चीज के लिए। सुमन हाँ, सो ये टेलीफोन इंडस्ट्री की सबसे बिगेस्ट कंपनीज हैं। ओके। तो आप क्यों जज बनना चाहते हैं या जुडिशरी को ज्वाइन करना चाहते हैं? So when I was in class 10, my father, for the very first time, pitched him the idea of making me a judge. I researched more on it, and even though I believe in the fact that all the other professions are noble, but however, being a judge will provide you the opportunity to do justice in favor of the party who needs the most. So I was more inclined towards the idea of impacting somebody's. वेरी गुड सर। What is section 110 of Indian Evidence Act? Section 110 of Indian Evidence Act, Senatic Community or here. Yeah. So Section 10 of Indian Evidence Act needs ownership of the property. So there's a presumption that if somebody is in possession of a property, he'll be the owner of the property until and unless proven otherwise. So there'll be presumption in favor of that person. What kind of presumption? It will be shall presumption, and until and unless proven otherwise by the other party who is claiming that the person is not owner of the property. Because possession is 9/10 of possession. Yeah. Good. And in what cases conclusive proof, provision regarding conclusive proof have been made in from that? So in the section number 4, the definition of conclusive proof have been given, and under which section number 41, section number 112, and section number 113 has been regarded as conclusive proof. However, I would like to cite a case of Nandalal versus Lata, wherein it was held that under section 112, when it was inserted in Indian Evidence Act, there was no way to prove the legitimacy of a child, but nowadays DNA test is there which can prove the legitimacy of a child. Therefore, we can regard section 112 of Indian Evidence Act not to be considered as conclusive proof, but as a reputable presumption of worth. That is, it can be considered as That means conclusive proof under section 112 has been diluted yes. by that case law, Yes. Badrak versus Yes. Badrak. We can determine the legitimacy of a child Okay. via the test. Who decides as to admissibility of an evidence and under what clause? Sir, under section 160. Sir, can I take a moment? Yeah, please. So under section 136 of Indian Evidence Act, judge has the authority to decide the admissibility of the evidence if it relates to the relevant facts and fact and fiction. Okay. And is character relevant in civil cases? So character is not relevant in civil cases under section 52 of Indian Evidence Act. However, there are two exceptions under which character has been determined relevant as per section number 50. Yes. The first case being when character itself is fact in issue, and the second one being when it relates to determination of damages in civil cases. Okay. In what provision, under what provision TIP is conducted in CRPC? In CRPC, so under section 54A of Code of Criminal Procedure, test identification by it. Okay. Recently, in 2021 and 2022, two landmark cases have been pronounced by the Supreme Court regarding bail. What are those two cases? So I'm sorry, I'm not able to. Have you heard about Satinder Kumar Entry versus CBI? So I have heard about this case. Can you tell me some of the guidelines of that case? So I'm sorry, I've not read this case. What is the difference between res judicata and order to rule? So res judicata applies on the judgments which has been decided, formal judgment which has already been decided. However, order to rule 2 deals with all the issue
that you could have raised, but however you have omitted or chose not to raise those issues, or not to raise those issues, Okay. you cannot raise in the subsequent proceeding unless you have obtained the leave of the court. What is Section 106 of CRPC? Oh, thanks, sir. I'm not even like. In cases of maintenance, So, no, I'm asking another question. In cases of maintenance, what kind of procedure regarding trial is uh, adopted by the court? so summary procedure is adopted. Procedure regarding someone's case. Sir, can I take a moment to answer previous question? Yeah, sure. So in 106 deals with security relating to peace. In cases of um, when there is an apprehension for conviction of a person. Okay. What is Section 464 of CRPC? 464. So, Section of 464 deals with discharge of sureties. 464. Son. I think you should go through the provision once again. And under what provision of CRPC High Court can conduct trial? High Court can conduct trial. In Section 474 of CRPC, the procedure with respect to High Court has been given, and it follows the procedure of which is followed by court of session. Okay. Ma'am. Tell me something about Section 438 of CRPC. 438 of CRPC. Ma'am, 438 of CRPC deals with anticipatory bail. If there's a person who is under who thinks that there's an apprehension of arrest with respect to non-cognizable case, so he can file an application before Court of Session and High Court for the same, and it is up to the discretion of High Court and Court of Session because the offence is non-variable offence. So it is the discretion of Court of Session or High Court to grant. However, the opportunity of being heard is given to the public prosecutor. Okay, can a person seek anticipatory bail in case of variable offence also? No, ma'am. The offence has to be non-bail. Okay, tell me something about the case of Lalita. Lalita Kumari? Ma'am, in Lalita Kumari, it was held that FIR has to be mandatorily registered, even though there is no prima facie case has been. Okay, please just. Even though there is no prima facie case, but FIR has to be mandatorily registered at police station. Okay. And have you heard about Jacob Pulian police? With respect to COVID test? Yes. It was held that by Supreme Court, it was held that it is not mandatory for citizens of this country to take COVID vaccine because it will go against their Article 21 of the Constitution. Okay, good. Tell me something about latent ambiguity and patent ambiguity and where it is given. Yes, ma'am. So, patent ambiguity is basically those ambiguities which can be seen, which are apparent, and it has been given under Section 93 of Indian Evidence Act. However, latent ambiguities are those ambiguities which cannot be seen. That means if the text of the document is plain and is not ambiguous, but however it does not apply to the facts, relevant facts or facting issue, then you can give evidence with respect to it, just to prove as to how the facts of the case will apply to relevant facts and issue. However, in patent ambiguity, you cannot give evidence if the text of the document is ambiguous and also it does not apply to the relevant facts and facting issue. Okay, what are the kinds of estoppel? Ma'am, there are 3 kinds of estoppel. First one by estoppel by judgment. The second one is estoppel by deed, and the third one is estoppel by contract. Is there any exception of estoppel also? Ma'am, I am not able to recall. Tell me, will
is a public document or a private document? Will is a private document. And what about plain and written statements? Plain and written statements also a private document. Are you sure? I mean, it is a private document or a public document? I'm if we are the provision of public documents and private documents given, section number 74 and 75 of Indian Evidence Act. 74 deals with public documents, 75 deals with private documents. Okay, what is undue influence? Now, undue influence is when there's one party who's in a position to dominate the will of the other party because of their age or because of their because of fiduciary relationship. For example, father is in a position to influence the will of his son with respect to any act. So this will be regarded as. Tell me difference between hurt and grievous hurt. Now, can I take a momentary obstruction? Okay. So 319 of Indian Penal Code deals with hurt and 320 of Indian Penal Code deals with grievous hurt. So hurt is any act done by a person which causes bodily injury, harm, or disease to the other person. When hurt is done under 8 circumstances which has been defined under section 320, it will be considered as grievous hurt. Those 8 clauses are, first one being immaculation, then private provision of either of the side, private provision of either of the ear, and fracture of bone, permanent disfiguration of face, or giving bodily injury, which will result, which can last up to 20 days. Very good. निहारिका, बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंट में डिफरेंस, बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस में. Sir, section 2A of CRPC defines bailable and non-bailable offence. Bailable offence are those offences under which bail is a right and it has been given under first schedule. If you have committed a bailable offence, it is your right to get bail under those offences. Okay. However, in case of non-bailable offence, which again has been defined under first schedule of CRPC, it is the discretion of the court whether to grant bail or not. And for bailable offence, you can apply for bail under section 436 of CRPC, and for non-bailable offence, section 437 of CRPC deals with non-bail. Very good. Only section 437. No, sir. Anticipatory bail also deals with non-bail offences. There is other section also pertaining to regular bails. Section 167 clause 2 deals with bail. That is default bail. There is other section after section 437. Section 439. 438 is granted by High Court and Court of Session. That was what I was trying to ask. कल आईपीसी को रिप्लेस करने के बाद भारतीय न्याय संहिता लाने की बात हुई है. इसमें टाइप ऑफ पनिशमेंट में एक पनिशमेंट और ऐड किया गया है, कम्युनिटी सर्विस. ये क्या है और कैसे इसे आप देखती हैं? सर, मुझे मेरे विचार से कम्युनिटी सर्विस बहुत ही अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा. कम्युनिटी सर्विस में आपको किसी जेल में नहीं रखा जाएगा और ना ही आपको कोई भी सीवियर पनिशमेंट दी जाएगी. रादर आपसे कोई ऐसा एक्ट कराया जाएगा जो कि कम्युनिटी इन जनरल के लिए बेनिफिशियल होगा. जैसे फॉर एग्जांपल putting as simple as a plantation of trees, anything. Okay, very good. कुछ आर्टिकल 21 को और एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? Yes, sir. Article 21 deals with right to life, and Supreme Court via various judicial pronouncement has expanded the ambit of right to life. I would like to cite a case. For example, a right to die, euthanasia, was initially rejected by the Supreme Court, saying that a right to die is not included in right to life. However, in recent judgments, Supreme Court has adopted this narrative that a person who is suffering from prolonged ailment can take euthanasia and can. 21 को हम पढ़ते हैं तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है, नो वन कैन डिप्राइव हिज लाइफ एंड लिबर्टी. इसका आगे एक फ्रेज है, वो क्या है? Except with procedure establishment. ओके, ये कितना सही है फ्रेज?
So procedure established by law initially जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स इसका मतलब क्या है? Sir, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ का मतलब क्या है? मतलब लॉ ने जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश किए हैं, जो क्राइटेरिया दिए, आप उसके अगेंस्ट जाके कोई भी एक्ट या किसी के भी राइट्स को वायलेट नहीं कर। फिर क्या चेंजेस हुए इसमें? तो इसमें चेंजेस ये हुए कि इसमें पहले सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि हम लॉ बना नहीं सकते, हम सिर्फ उसकी वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। बट हाउएवर इन्होंने बाद में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी अप्लाई किया और उन्होंने बोला कि हाँ, लॉ जस्ट है, फेयर है एंड रीजनेबल है, ये भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो अभी अगर हम नई तरीके से देखें तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ को वैलिडेट भी कर सकता है और इसकी लॉ को एप्लीकेबिलिटी को भी इंटरप्रेट कर सकता है। मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या इवन कोई भी कोर्ट हो, उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो सिर्फ इंटरप्रिटेशन तक ही नहीं है, रादर वो वैलिडिटी को भी चेक कर सकता है whether the law is just fair and reasonable or not. जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच, ये 3 स्टेप्स हमें दिख रहे हैं। अभी आप रिव्यू करने तक की बात कर रहे हैं, फिर ओवररीच हो रहा है, फिर एक्टिविज्म हो रहा है, फिर ओवररीच हो रहा है। क्या इन तीनों को आप डिफाइन कर सकते हैं? Yes. So judicial review is basically आर्टिकल 13 के अंदर एम्बिट में आता है, जहाँ पे अगर कोई भी एक्ट है जो कि फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। दैट इज जुडिशियल रिव्यू, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अपनी पावर का इस्तेमाल करके किसी भी एक्ट को रिव्यू करती है। जुडिशियल एक्टिविज्म इज अपनी पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करके उस एक्ट को जजमेंट देना, एंड जुडिशियल ओवररीच इज जब अपनी पावर को एक्सेसिव वे में इस्तेमाल। ठीक है वैसे जो ये रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, जो एक सीक्वेंस में आ रहा है, थेफ्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, एक्सटॉर्शन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, तो इनमें की डिफरेंसेस और की सिमिलैरिटीज जरूर देखी है। जैसे एक करेक्शन ये हो कि 403 में भी इनिशियली इंटेंशन नहीं रहता है, 405 में भी नहीं रहता, लेकिन उसमें इंटरेस्टमेंट होता है और इसमें ओनर कैन नॉट बी, ओनर नहीं होता उस प्रॉपर्टी। और इंटरेस्टमेंट क्या है ये भी देखना होगा। इंटरेस्टमेंट मीन्स कि द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी हैज बीन एब्डिकेटेड, कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट एब्डिकेशन। तो ये जो सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं, अगर मैं कहूँ कि व्हाट इज द की डिफरेंस, कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में व्हाट इज द की सिमिलैरिटी? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में इनिशियली जो है मैला फाइडी इंटेंशन एफर्ट मींस ये नहीं होता, वो बाद में डेवलप होता है, लेकिन थेफ्ट में ये राइट फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन होता है। तो ये जो की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं, प्लीज गुड, बाकी सब बहुत अच्छा है। कि एक चीज़ और, जैसे संडे सेक्शन 106 पूछा था एविडेंस का, इसमें आप ये जो रेसिक्स लॉकेटर में अभी नहीं 106 एविडेंस है दोनों पूछा, संडे पूछा था, इसमें आप ये रेसिक्स लॉकेटर की जो है इसमें ये आप इसको ऐड कर सकते हैं, बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन द लॉ। बाकी जैसे लेटेंट एम्बिग्विटी और पेटेंट एम्बिग्विटी उसको आपने एक्सप्लेन किया, दैट वाज गुड, बट यू कैन से आप इसमें पर्टिकुलरली बता सकते हैं कि जैसे कि लेटेंट एम्बिग्विटी को हम सेक्शन 93 एंड 94 और पेटेंट एम्बिग्विटी फिर उसके नीचे आ रही है, तो ये स्पेसिफिक करके हम बता सकते हो। ऑल दो आंसर वाज गुड, बट इसको स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते आप सेक्शन 99 भी बता सकते हैं, फंक्शन 99 वहाँ पे कोई एम्बिग्विटी नहीं। और ये वाला जो ये बार बार ही रिपीट करती है कि मैं मूवमेंट ले सकती हूँ अगेन आंसर देने के लिए, इसको क्या कह रहे हैं? हाँ, इसको थोड़ा सा नहीं बोलने की जरूरत है, हमें लगता है कि तुम बड़ी जल्दी ही आंसर कर रही हो, तो टेक अ पॉज, उसके बाद आंसर करो, बार बार पूछो मत, एक बार ही पूछ लीजिए। और अगर एक क्वेश्चन स्किप हो गया, जैसे बीच में हुआ कोई सेक्शन स्किप हो गया, सर ने पूछा था और उसको तुम्हें थोड़ी देर बाद याद आया, तो उसको आंसर देने की जरूरत नहीं, उसको भूल जाओ वहाँ पे भी। हाँ मतलब ऐसे ये मतलब थोड़ा सा अलग साउंड कर रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे हमारे सामने एक एक्सपर्ट ने कोई बहुत स्पेसिफिक चीज बैठी, इसने सब रट लिया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, तुम अच्छा करोगे ना, बस एक और फैक्चुअल क्वेश्चंस में अगर नहीं पता है तो आंसर मत करो गलत के बजाय। आपने कुछ पूछा था ना, इसने कोई सेक्शन गलत बता दिया था। हाँ 464 और सर ने आपको बोला भी नहीं फिर से रिवाइज करना, तो ऐसे क्वेश्चन को आंसर नहीं करना। और अगर एक बारी कोई भी मेंबर बोल दे रहा है कि आप कंफर्म हो, तो थोड़ा सा हम ऐसा शो कर ले अगर हम कंफर्म नहीं है कि हम कंफर्म नहीं है, फिर मतलब ये श्योर करके दोबारा फिर से वही बात करना, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है।
ठीक, अदरवाइज़ सब कुछ बहुत अच्छा है।